everyone, welcome back to another class of body fluids and circulation. Today we are going to discuss about cardiac cycle. So in cardiac cycle we will discuss the flow of blood inside the heart and through the blood vessels. Okay, means how the heart pumps the blood from one chamber to the another chamber and then through the blood vessels. So for this, first of all, we need to know the different parts of the heart. So that we have already discussed in our last class, but now we will again see the different parts in a gist. So the heart mainly consists of 4 chambers, which are left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Okay, so the oxygenated blood from the lungs enter to the left atrium through the pulmonary vein. Then the left atrium releases the blood into the left ventricle through bicuspid valve. Then from the left ventricle, the blood moves through the semilunar valve to the aorta. Okay, and then aorta will distribute the blood all over the body where the respiration will occur in the tissue, and after respiration carbon dioxide will release, and this carbon dioxide along with the blood, which is now known as deoxygenated blood, will enter to the right atrium through the superior vena cava and the inferior vena cava. Okay, so after entering into the right atrium, the blood will move to the right ventricle through tricuspid valve, and from the ventricle, means from the right ventricle, the blood will move to the pulmonary artery through another semilunar valve. Okay. So in cardiac cycle, we will discuss that how each of these chamber receives and releases the blood, and how these valves, means semilunar valves, tricuspid and bicuspid valve, they opens and closes. Okay, so along with these different parts of the heart, we also need to know 2 terms to understand the cardiac cycle. So these terms are systole and diastole. Okay, systole means contraction and diastole means relaxation. So when the heart is in relaxed stage, means it's in a normal condition, then this stage is known as diastole. Okay, so in diastole, heart receives the blood. Okay, means heart blood से fill होता है, तो इस relaxed condition of heart को कहा जाता है diastole. And जब हार्ट ब्लड पंप करता है तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ओके, मींस इनसाइड द हार्ट जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, एंड इसको कहा जाता है सिस्टोल. इम्पोर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस द कार्डियक साइकिल. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल is joint diastole, which is also known as cardiac diastole. Diastole means relaxation. So as ये cardiac cycle एक cyclic process है, तो हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे रिलैक्स कंडीशन से, मीन्स हार्ट जब रिलैक्स होगा. ओके, जॉइंट डायस्टोल मीन्स बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स कंडीशन. ओके, सो at first the heart is in relaxed condition, then the tricuspid and the bicuspid valve, this is the tricuspid and here is the bicuspid valve, they will open. Okay, as these tricuspid and bicuspid valve will open, then the blood will enter through the pulmonary vein and vena cava, fill the atrium, and then the blood will releases to the ventricles. Okay,
means the left atrium will release the blood to the left ventricle through the bicuspid valve, and the right atrium will release the blood to the right ventricle through the tricuspid valve. Okay, so this occurs in a relaxed condition, means heart अभी एक normal relaxed stage पे है, जहाँ पे the atrium will fill and the tricuspid and bicuspid valve will open और atrium से blood ventricles में release होगा. Okay, but in this condition only 50% of the blood from the atrium will release to the ventricles. Normal condition में से 50% blood ही transfer होगा ventricle में. So the next step is atrial systole. Okay, so remaining 50% जो blood है उसका ट्रांसफर होने के लिए एट्रियम को कंट्रैक्ट होना पड़ेगा. ओके, सो द साइनोएट्रियल नोड व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे जो साइनोएट्रियल नोड होगा ये कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा व्हिच विल देन send signal and this will stimulate the atrial systole. Okay, sinoatrial node ये SAN ये कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से जो एट्रियम है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे ही एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तो रिमेनिंग जो 50% ब्लड है दिस विल रिलीज टू द वेंट्रिकल्स. ओके, so this is atrial systole, which means to contract the atrium to empty its chamber so that it can release its content to the ventricles. Okay, so after atrial systole the next step is atrial diastole. जैसे ही एट्रियम में जो ब्लड है ये रिलीज हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, एट्रिया फिर से रिलैक्स कंडीशन में, मींस अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आ जाएगा. सो दिस इज नोन एज एट्रियल डायस्टोल. ओके, सो एट्रियल डायस्टोल होने के बाद अभी जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल will be filled with the blood. Okay, the next step is the ventricle need to be contract. नेक्स्ट स्टेप में वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, एंड ये जो ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा सो दैट जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आया है वो अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके एट्रियम में नहीं जा पाए. ओके, सो ये यूनि डायरेक्शनल है, एट्रियम से ये वेंट्रिकल्स में आया है. इसके बाद ये जो वाल्व है बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व इट विल बी क्लोज so that the blood can't go to the backward direction into the atrium. Okay, इसके बाद ये वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल में जो ब्लड है दिस नीड टू बी go to the pulmonary artery and the aorta. मीन्स ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है अभी इसको मूव होना पड़ेगा इनटू द ऑर्टा. ओके, और ये जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है दिस नीड टू फ्लो टू द पल्मोनरी आर्टरी. ओके, सो इसके लिए ये जो सेमिलूनर वाल्व है अब तक ये सेमिलूनर वाल्व क्लोज था. सो जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होना शुरू करेगा सेमिलूनर वाल्व विद द प्रेशर ये ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद वेंट्रिकल से जो ब्लड है इट विल मूव टू द ऑर्टा एंड द पल्मोनरी वेन. ओके, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है दिस विल मूव टू द मींस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल मूव टू द ऑर्टा एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द right ventricle it will move to the pulmonary vein. Okay, so this occurs after the ventricular systole. ventricles जब contract हो जाएगा, contract होगा because it need to be emptied its chamber. पूरा chamber को खाली करना पड़ेगा. जितना भी blood है chamber में सब blood को जाना पड़ेगा into the vessel. Okay, so
वेसल में ब्लड को सेंड करने के लिए वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, बट अभी एट्रियम में कुछ भी ब्लड नहीं है, इसलिए एट्रियम डायस्टोल कंडीशन मींस रिलैक्स कंडीशन में है। ओके, सो दिस इज द atrial diastole and the ventricular systole. Okay, ये blood move होगा to the respective vessels. After that, what will happen? The ventricle will relax. Blood from the right and left atrium, when they will move to the pulmonary vein and the aorta, ventricles जब पूरा empty हो जाएगा तब वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, मींस इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होने के बाद जितना भी ब्लड है वो वेसल्स पे चला गया, देन द सेमिलुनर वॉल्स विल क्लोज। अब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा अगेन फॉर द सेम रीजन कि जो ब्लड वेसल्स पे चला गया वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आके वेंट्रिकल्स में नहीं आ जाए। ओके, that's why the semilunar valves will be closed. Now at this condition, the atrium and the ventricles both are in relaxed condition. Okay, atrium और ventricle दोनों relaxed condition में है, so it is known as joint diastole. Joint diastole means both the atrium and the ventricles are in relaxed condition. After that, the whole process will again repeat. Okay, so atrium पहले fill होगा, then it will move to the ventricles, and after the ventricles it will then again move to the respective vessels. Okay, so this complete cyclic process is known as cardiac cycle. Okay, so this is the sequential event in the heart which includes the systole and diastole, and this continuously gets repeated. Okay, this is the cardiac cycle. So in 1 minute the heart beats 72 times, that is that the number of cardiac cycle in 1 minute is 72. Okay, ये जो अभी हमने जितना भी steps पढ़ा, that is atrial systole, then ventricular systole, then joint diastole, ये 72 times होता है per minute. Okay, so from this we say that the heart beats 72 times. Okay, so अगर 1 मिनट में 72 times हो रहा है, that means one cardiac cycle is equals to 0.8 seconds. Okay, means it is 60 by 72. So by these we can calculate one cardiac cycle which is 0.8 seconds. Okay, 0.8 seconds, the different stages of the cardiac cycle, that is atrial systole, ventricular systole and joint diastole, they contribute particular duration. So atrial systole, it lasts for 0.1 second, ventricular systole, it lasts for 0.3 second. It is for a single cardiac cycle. Okay, and the joint diastole, it lasts for 0.4 seconds. So overall with these 3 stages, means in one cardiac cycle it becomes 0.8 seconds. Okay, so this is about only one cardiac cycle, and in 1 minute there are, in average human, there are 72 cardiac cycles. Okay, so let's discuss some more terms. Next is stroke volume. Okay, stroke volume means the volume of blood which is pumped out of the ventricles in a single cycle. एक सिंगल साइकिल में वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है, ओके, उसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. सो the blood which is pumped out of the ventricles in a single cycle is approximately 70 milliliter. Okay, so this is the stroke volume, and from the stroke volume we can calculate the cardiac output. Cardiac output is the stroke volume multiplied by heart rate.
So stroke volume is approximately 70 ml and the heart rate is 72 times per minute. So if we calculate this, we will get approximately 5 liters per minute. Means in 1 minute 5 liters of blood pumped out of the ventricle. Okay, so this is known as the cardiac output. Okay, the next is lub and dub, which are the sounds of the heart. So doctor used the stethoscope to hear the sound of the heart, and these sounds are the lub and dub. So lub is the sound produced by the tricuspid and the bicuspid valve. When the tricuspid and bicuspid valve get closed, okay, this closing sound is the lub. Okay, and dub is the sound which is produced by the closing of semilunar valve. When the semilunar valve get closed, then the sound which is produced is the dub. Okay, so these are the two sounds of the heart, lub and dub. Okay, so that's all about the cardiac cycle. So next we will discuss more from the